हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव। मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एट जुडिशरी गोल्ड आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जुडिशरी गोल्ड चैनल के ऊपर। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे बीच में अभी एक सीबीआई असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की एक बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है। जो आप जानते हैं 11 जनवरी को इसका पेपर होने जा रहा है। हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, जिसमें मैं आप लोगों को रोज सीबीआई असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के साथ सॉल्व करने आया हूं। और हम रोज इसी समय पे मिलेंगे और इसके इंपॉर्टेंट मिक्स्ड एमसीक्यूज आपके साथ सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं सीबीआई एपीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आप लोग मुझे एक टैग चेक दे दीजिए दैट एवरीथिंग इज विजिबल एंड प्रॉपरली ऑडिबल टू यू गाइस। एक क्विक चैट टैग चेक फ्रॉम योर साइड गाइस, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए सो दैट वी कैन मूव अहेड विद दिस सेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 1 क्लॉज 1 इनमें से क्या चीज आप लोगों को बताता है। चलिए ऑप्शंस आर, इंडिया अ रिपब्लिक शैल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनिटरी स्टेट, सी इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और डी भारत शैल बी कॉन्फेडरेशन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज मार्क द करेक्ट आंसर गाइस। चलिए द करेक्ट आंसर एज वी ऑल नो दैट इट इज सी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात आपको आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही आपको बताता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स and alteration of existing states under article 3 of constitution of india। ठीक है, the options are 1, a bill for altering the area boundaries or name of the state can be introduced in parliament only after the president has obtained the concurrence, that is agreement of the legislature of the affected state। ठीक है, आपको बताना है आर्टिकल 3 के अंदर ये कौन से स्टेटमेंट सही बैठते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, द पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय separating territory from an existing state also include the power to unite a part of any state or union territory to any state or union territory। ठीक है गाइस, ये दो स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। वी नो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं अंडर योर सीबीआई एपीपी एग्जामिनेशन। इसमें आपको बेसिकली बताना है कि इन दो स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलिए ऑप्शंस आर, ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2 आर करेक्ट, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए गाइस प्लीज read the question carefully and give the correct answer। चलिए, as we all know the right answer is B, that is only 2 is correct, that is the power of parliament under article 3 to form a new state by separating territory from an existing state also include the power to unite a part of any state or union territory to any other state or union territory। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी, ओके सिंपल क्वेश्चन, अ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी, ऑप्शंस आर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ऑप्शन सी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या ऑप्शन डी नॉट एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एनी हाउस। गाइस दिस इज वन ऑफ द आई थिंक सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव एनकाउंटर्ड हियर। देखिए बताइए इसका सही क्वेश्चन क्या, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। द राइट आंसर इज
ऑप्शन A, that is ex officio chairman of council of state. We know that जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन states that every person who is arrested or detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours. within a period of 24 hours. ठीक है, ये आपको बताना है कि किस प्रोविजन में आपको बताया गया है 24 hours of such arrest. Options are Article 22 subclause 1, option B Article 22 subclause 2, Article 23 subclause 3 और Article 22 subclause 4. Again a simple question but yet कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के, जहां पे कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको सेक्शंस देखने को मिलते हैं, राइट? तो इसका सही जवाब दीजिएगा इस मुझे. द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, दैट इज आर्टिकल 22 सबक्लॉज 2. बेसिकली यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दैट देयर इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है दैट ही कैन नॉट बी डिटेन इन द कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स. इसलिए उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स में प्रोड्यूस करना जरूरी है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Question number 5 is consider the following provision regarding the conduct of the government businesses in India. चलिए देखते हैं. Options are all executive actions of the government of India are formally expressed to be taken in the name of Prime Minister, यानी आपका PM. Option B is the authentication of orders made in the name of President is specified by the rule made by the Attorney General of India. क्या ऐसा कोई प्रोविजन आपको देखने को मिलता है संविधान में? बताइए. ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट इज empowered to make rule for the convenient transaction of businesses and its allocation among minister. Option D the validity of an authenticated order made in the name of president can be challenged on the ground that it was not genuinely executed by the president. चलिए, I think a conceptually sound question आप लोगों के सामने है. ये प्लीज बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए. ध्यान रखिएगा ये जवाब आपको विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देना है. द राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट इज empowered to make rules. The president is empowered to make rule for the convenient transaction of businesses and its allocation among ministers. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. With reference to the Constitution 106th Amendment Act 2023, consider the following statement. ध्यान रखिएगा 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये सही क्वेश्चन का जवाब देना है. चलिए ऑप्शंस आपके सामने सबसे पहले दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. इस स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है एंड देन आपको सही ऑप्शन का चयन करना है. स्टेटमेंट 1 द एक्ट मैंडेट द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बट नॉट इन द सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. यानी 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन की बात करता है इन द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली बट इट डज नॉट डिस्टर्ब द एक्चुअल existing reservation for scheduled caste and scheduled tribe. चलिए स्टेटमेंट 2 the commencement of the women's reservation is not immediate. ठीक है, is not immediate as it will effective only after the publication of the census conducted following the act's commencement and the subsequent delimitation process. ठीक है, बताइए दोनों ही स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है. इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शंस आर ए Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Both statement 1 and 2 are correct. या both statement 1 and 2 are incorrect. चलिए
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा गाइस। बताइए, द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपको क्या बताया गया था। चलिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों के आंसर सही हो रहे होंगे। प्लीज राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन द चैट बॉक्स सो दैट हम इस सेशन के एंड में ये जान पाए कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये 50 क्वेश्चन, जो आज के 50 क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 द कोर्ट held that options are A, article 19, 20, 21 must be read together. Okay, option B, article 19, 21 are interconnected. ठीक है, सी, फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, एंड ऑप्शन डी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चलिए बताइए, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट दैट द फंडामेंटल राइट आर ऑपरेट इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट। बिल्कुल सही। सेक्शन under the A.K. Gopalan, the Supreme Court has categorically said that the fundamental right operate in the watertight compartments. This is the one of the famous quote that Supreme Court has made in this particular case. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं guys. Next question is, the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. This is mentioned under which provision? That is, it is a fundamental duty, whether it is DPSP, whether it is fundamental right, and both A and B. इसका आंसर बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा गाइस, ये सही जवाब आप लोगों से मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चाहूंगा। द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, दैट इज इट इज बोथ DPSP एंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who has the authority to determine the precedents in emoluments, allowances and privileges? Supreme Court, Union Cabinet, Parliament or Finance Commission? चलिए, the right answer is absolutely right, that is your Parliament. Parliament ही है जो हमारे वो Supreme Court as well as President के जो emoluments, allowances होते हैं और privileges होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट, all executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of president. It has been provided in Article 77 subclause 1, Article 77 subclause 2, Article 77 subclause 3 और Article 78. चलिए एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। द राइट आंसर इज Article 77 subclause 1. Next question, based on the definition, election means any election by whatever means held under any law for the purpose of selecting members of parliament or any legislature, local authority or other public authority. Which of the following statement is most accurate? ठीक है, इस डेफिनेशन के बेस पे आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है। द डेफिनेशन लिमिट्स द इलेक्टोरल मेथड to only direct election since the process must be prescribed by law. Option B, the term election only applies to the process of choosing member of the union and select and state legislature. The section of members, option C, the selection of members for the municipal corporation, a local authority, is covered by this definition but only if the election is direct. D, the definition covers the selection of member for parliament, a state legislature or local authority or any other public authority irrespective of the method used, direct or indirect. चलिए, the right answer of this particular question guys, please have a look, इस क्वेश्चन को देखिए और कोशिश कीजिए मुझे इसका सही जवाब देने के लिए। The right answer of this question is option D. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द पीसी एक्ट 1988 द टर्म अनड्यू एडवांटेज मींस, ऑप्शंस आर
any monetary benefit given to the public servant as a reward for lawful work. Okay, any gratification whatever other than the legal remuneration. Option C, only benefits that are unlawful and pecuniary in nature. Option D, gratification received with prior written approval of the competent authority. चलिए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए गाइस? आई थिंक दिस इज अ, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इट कैन बी आंसर्ड थ्रू कॉमन सेंस आल्सो. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनी ग्रेटिफिकेशन व्हाटएवर अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन. वही आपका अनड्यू एडवांटेज कहलाएगा. चलिए नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ विच सेक्शन, द पर्पस ऑफ which section director in relation to a firm means a partner in the firm under PC Act 1988. Options are section 9, section 10, section 11 and section 12. Please give the correct answer. The right answer is option B, that is section number 10. Next question, a person aggrieved by order of special court under section 17D must file an appeal to the High Court of Jammu and Kashmir within what period? ठीक है, चलिए ऑप्शंस आर 2 weeks from the date of order was made. 2 weeks, ठीक है, 2 weeks from the order was made. 1 month from the date of receipt of such order. ठीक है, 1 month, ठीक है, 90 days from the date of order. 90 days from the date of the order, या 6 weeks from the date of the institution of prosecution. 6 weeks. चलिए, the right answer of this question is option number B, that is 1 month from the date of receipt of such order. ठीक है, चलिए next question guys, which of the following chapter deals with the sanction of prosecution? Which of the following chapter deals with the sanction of prosecution? Chapter 3, chapter 4, chapter 5 और chapter 6? चलिए इसका सही जवाब, the right answer is chapter 5, that is option number C. चलिए आगे चलते हैं. The next question is, as per section 4 of PC Act 1988, an endeavor must be made to ensure that the trial for an offence by special judge is conducted within a period of 2 years if the trial is not concluded within this initial period. What is the maximum duration by which the period can be extended at any one time? चलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए गाइस? प्लीज हैव अ लुक. ऑप्शन को देख लेते हैं. 3 months, 4 months, 6 months या 1 साल. ऑप्शन आपके सामने है. प्लीज give the correct answer. The right answer is 6 months, that is option number C. चलिए आगे चलते हैं. Next question, if during the course of summary trial, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. if during the course of summary trial for an offence under the Essential Commodities Act, the special judge determines that the sentence of imprisonment exceeding 1 year may have to be passed, what change in procedure is the special judge mandate to make? Options are, the special judge shall recall any witness, examine and proceed to hear or rehear the case according to the procedure prescribed for trial of warrant case by magistrate. बहुत ध्यान से देखिएगा. Option B, the special judge must continue the summary trial but must record the reason for likely longer sentence. ठीक है. Option C, the special judge must transfer the case to the regular court of session for the trial. Option D, the special judge shall convert the case into summon case and continue the proceedings. चलिए, the right answer of this particular question is option number A. ठीक है. I hope आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 17 का. चलिए आगे चलते हैं. Which of the following in relation to the person charged with an offence punishable under the Prevention of Corruption Act 1988 to be a competent witness
इज आर करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस, स्टेटमेंट 1, shall not be called as a witness except of his at his own request. B, 2, shall not ask under any circumstance show that he has committed any offense other than one with which he is charged. 3, may be asked about his bad character, okay, if he has given evidence against any other person charged with the same offense. Options are 1 and 3 are correct, only 1 is correct, only 3 is correct, yeah, both 1 and 2 are correct. चलिए, the right answer is option A, that is 1 and 3 both are correct. ठीक है, ये statement and statement 3 are correct. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। For offense under section 7 of Prevention of Corruption Act 1988, which of the following statement are correct? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। Statement 1, in the absence of the complaint, it is permissible to draw an inferential deduction of culpability, that is guilt of public servant based on the other evidence adduced by the prosecution. Statement 2, on proof that a public servant has attempted to obtain any undue advantage, there is nothing in section 20 of the act that could raise a presumption that the legal gratification for a motive or reward. 3, the conduct of a public servant can be proved by circumstantial evidence in the absence of direct, oral or documentary evidence. चलिए, सही ऑप्शंस हैं इसके आप लोगों के सामने। Options are 2 and 3 are correct, only 2 is correct, only 1 is correct, या only 1 and 3 are correct. चलिए guys, please give the correct answer of this question. Section 7 Prevention of Corruption Act से क्वेश्चन है आपके सामने। The right answer is option D, that is 1 and 3 both are correct. Next question. A special judge appointed to try offences under the Prevention of Corruption Act 1988 can try summary way an offence committed by a public servant, in relation to the contravention of. ठीक है, again 3 statement are there. Any special order under section 1, section 12A clause 1, subsection 1, the Essential Commodities Act 1955. 2, an order referred to section 12 subsection 2 clause A of the Essential Commodities Act 1955. 3, an order referred to in section 12A subsection 2 clause B of the Essential Commodities Act 1955. आपको बताना है the correct statement. The options are only 1 is correct, only 2 is correct, 1 and 2 both are correct, 1, 2, 3 all are correct. चलिए, the right answer of this particular question is yes, absolutely right guys. The option C, that is 1 and 2 are correct. Next question. Which of the following power can be exercised by the central government under the provision of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 for the investigation of any offences specified in the notification issued under section 3 of this act? Options are statement 1, appoint director of the Central Bureau of Investigation on the recommendation of the committee specified under the act. Okay. Statement 2, extend the power of Delhi Special Police Establishment to railways. 3, extend the power to Delhi Special Police Establishment to any state. चलिए, options are A, only 1 is correct, B, only 2 is correct, C, 1 and 3 are correct, and D, 1, 2, 3 all are correct. चलिए, the right answer is all are correct. Next question guys. The Delhi Special Police Establishment Act 1946, the options are contains the offences to be investigated under this act, empowers the central government to specify offences which can be investigated by the Delhi Special Police Establishment. C, empowers the central government to include or exclude any of the offences in the list of offences included under the act. And D, contains classes of offences to be investigated under this act. चलिए,
The right answer is option B. That is, empower the central government to specify offences which can be investigated by the Delhi Special Police Establishment. Chale. Next question. The word and experiences used, the expressions used under the Delhi Special Police Establishment Act 1946 but not defined therein have meaning assigned under the Constitution of India as defined therein, Central Vigilance Commission Act 2003 if defined therein, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इफ डिफाइंड देयरइन। आपको बताना है करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट कौन से। ऑप्शंस आर ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट या 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। द राइट आंसर इज 2 इज ओनली 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A director appointed under the Delhi Special Police Establishment Act 1946 shall not be transferred except with the previous sanction of court. Sorry, as the previous consent of, देखिए shall not भी लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। Options are Chief Justice of India, option B committee under section 4A subclause 1 of the act, cabinet committee on security या central vigilance commissioner। चलिए the right answer of this question is yes, the committee that is established under section 4A subclause 1 of this particular act. The term Central Bureau of Investigation came into existence through a Home Ministry resolution in the year of 1960, 1961, 1962 or 1963. चलिए ये एक important question है guys, please note down this particular question. The right answer is 1963. चलिए आगे चलते हैं। द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 प्रोवाइड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफाइड ऑफेंसेस इन ऑल यूनियन टेरिटरीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल पुलिस फोर्स, एक्सटेंशन ऑफ पावर्स इन ज्यूरिसडिक्शन फॉर स्पेशल पुलिस फोर्स टू ऑफेंसेस कमिटेड इन अ कैंटोनमेंट एरिया लोकेटेड विद इन अ स्टेट। आपको बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है चलिए ऑप्शंस आर ओनली वन एंड टू आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। चलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, द ऑप्शन डी दैट इज 1 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइबर टेररिज्म आर करेक्ट? इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। आपको बताना है साइबर टेररिज्म से रिलेटेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कौन सा प्रोविजन सही है। ठीक है चलिए ऑप्शंस आर इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस, ऑप्शन 2 इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, स्टेटमेंट 3 द सीरियसनेस ऑफ साइबर टेररिज्म एज ऑफेंस is reflected in the fact that it does not need mens rea as element of crime, or statement 4 it is defined under 66F of the act। ठीक है चलिए आपके सामने ऑप्शंस है 1 2 3 4 all the statement are correct, 1 2 3 is correct, 1 2 4 are correct and 3 and 4 are correct। चलिए the right answer is absolutely right, that is 1 2 and 4 are correct, that is 1 2 and 4। ये स्टेटमेंट आपके सामने जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड फॉर ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? ठीक है अगेन एक सिंपल इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आया है। ऑप्शंस है 6A 7A 8 या 10। आपको बताना है किस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रोविजन में ये आपको बताया गया है। एब्सोल्युटली राइट गाइस, सेक्शन 7A। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस शैल बी मेड इन सच फॉर्म accompanied by such fee not exceeding 5,000 rupees as may be prescribed by the central government। ठीक है as may be prescribed by the central government and shall be made not less than in how many days before the date
ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस। आपको बताना है कितने टाइम दिन का समय अवधि यहाँ पे दी गई है। ऑप्शंस आर 45 डेज, ठीक है, 45 डेज या 30 डेज या 90 डेज या 60 डेज, ठीक है। 45 डेज, 30 डेज, 90 डेज या आपको 60 डेज का एक टाइम पीरियड देखने को मिलता है अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। प्लीज गिव द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज 45 डेज। चलिए, which of the following provision states that the director shall hold office for a period not less than, कौन सा प्रोविजन आपको बता रहा है? सेक्शन 4 और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ऑप्शन बी सेक्शन 4A 4 इयर्स, सेक्शन 4B 2 इयर्स, सेक्शन 4C 4 इयर्स। बेसिकली आपको यहाँ पे प्रोविजन भी बताना है ऑफ दिस एक्ट, और जो प्रोविजन में टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। चलिए, द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, 2 इयर्स विच इज गिवन अंडर सेक्शन 4B ऑफ दिस एक्ट। चलिए, next question, the provision relating to the legal recognition of the electronic signature is contained under which section of the information technology act? Again इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है आपको। ऑप्शंस आर सेक्शन 3, सेक्शन 3A, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंड देन गिव द राइट आंसर। द राइट आंसर इज सेक्शन नंबर 5, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग अपने आंसर्स मैच करते जा रहे होंगे कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइबर सिक्योरिटी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? ऑप्शंस आर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 UA, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ZA, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 NB एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन TB। अगेन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगेन सिंपल बट येट थोड़ा सा रिमेंबर अगर आपको होगा, ध्यान में होगा, तो ही आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए, प्लीज गिव द राइट आंसर गाइस। यस, एब्सोल्युटली राइट, जिनने भी इसका सही आंसर दिया है वो है सेक्शन 2 1 एंड B। चलिए, आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अंडर सेक्शन 70A ऑफ द IT Act 2000 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर all measures including research and development for the protection of critical information infrastructure, ठीक है। ऑप्शंस आर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ऑप्शन बी साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल, ऑप्शन सी नेशनल नोडल एजेंसी या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए गाइस, प्लीज बताइए मुझे। द राइट आंसर इज यस, नेशनल नोडल एजेंसी, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वॉज एडेड बाय द 2017 अमेंडमेंट एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 2(1) DA, सेक्शन 2(1) NA, सेक्शन 1 TA, सेक्शन 2(1) UA। आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है। चलिए, ऑप्शंस आर ओनली A इज करेक्ट, ऑप्शन B C D E आर करेक्ट, ऑप्शन C B C E आर करेक्ट या ऑप्शन D A B एंड D ओनली आर करेक्ट। चलिए, द राइट आंसर इज ओनली A, that is section 2(1) DA is added by your 2017 Amendment Act under the Information Technology Act. चलिए, which section are covered under the offenses violation of privacy under section 66E Information Technology Act 2000? ठीक है, आपको बताना है कौन से एक्शंस कवर हो रहे थे आपके इस पर्टिकुलर प्रोविजन से। नॉन कंसेंशुअल कैप्चर, पब्लिकेशन एंड transmission of intimate images. B, knowingly transmission and publication of intimate images only. C, non-consensual publication of intimate images only. या D, non-consensual and consensual capture, publication and transmission of
इंटीमेट इमेजेस। ठीक है, चलो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है द राइट आंसर एंड दैट इज योर नॉन कंसेंसुअल कैप्चर, पब्लिकेशन, ट्रांसमिशन एंड इंटीमेशन ऑफ सच इमेजेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आपको बताना है कंट्रोलर के क्या फंक्शंस हैं। स्टेटमेंट्स आर exercising supervision over the activities of certifying authorities, b certifying public keys of the certifying authorities, c laying down standard to be maintained by the certifying authorities, ठीक है, and option d summoning and enforcing attendance any subscriber and examining him on oath. Statement d felicitation of the establishment of any electronic system by a certifying authority. ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं गाइस, बी सी डी ई, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सी डी एंड ई आर करेक्ट, या ए बी सी आर करेक्ट, या ए बी सी डी आर करेक्ट, या ए बी सी एंड ई आर करेक्ट। देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यहां पे आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको पढ़ने की जरूरत होती है। अगर थोड़ी भी जल्दबाजी की तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, तो प्लीज टेक योर टाइम, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड देन गिव द राइट आंसर। ठीक है, चलिए द राइट आंसर इज ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई, ये चारों ही स्टेटमेंट आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सही बैठते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? ऑप्शंस आर हैज द पावर ऑफ सिविल कोड which are conferred on the appellate tribunal under section 57 subsection 2, all the proceeding before it deemed to be a judicial proceeding under section 193 or 288 of the IPC. Statement C, deemed to be a civil code for the purpose of order 21 CPC 1908. ठीक है, ऑप्शन डी स्टेटमेंट डी, deemed to be a civil code for the purpose of section 340 and 341 CRPC. ठीक है, चलिए ऑप्शंस आर ए बी सी आर करेक्ट, सी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है, ए सी ओनली आर करेक्ट, या बी सी डी ओनली आर करेक्ट। चलिए द राइट आंसर इज बी सी डी, ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व्हाट इज द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द display of license by the certifying authority? Options are the license must be submitted annually to the controller for verification, b the license must be displayed on the website of certifying authority only, ठीक है, option C is license must be displayed at the conspicuous place of the premise in which the certifying authority carries on its business, option D no such requirement exists under the IT Act। चलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए गाइस, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज द लाइसेंस मस्ट बी डिस्प्लेड एट द कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द प्रीमाइसेस इन व्हिच द सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैरीज ऑन इट्स बिजनेस। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव भी है। चलिए इंटरमीडियरी हैज बीन डिफाइंड इन व्हिच ऑफ द सेक्शन ऑफ द AIT एक्ट, सेक्शन 2X, सेक्शन 2Y, सेक्शन 2W, सेक्शन 2UA? The right answer is section 2W. Please note down this particular question is important question guys. ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है बिकॉज, और सिर्फ यही नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपको इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पे जो बेस्ड है हमारे ये क्वेश्चन, ये आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are correct under section 3 of the Informative Technology Act regarding the authentication of the electronic record? Options are a subscriber may authenticate an electronic record by affixing his digital signature. 2, authentication is effected by the use of asymmetric crypto system and a hash function.
3. The conceptually flexible to derive the original electronic record from the hash result. 4. The private key and public key used in a digital signature are unique to the subscriber and together form a functioning key pair. Okay. 5. Any person can verify the electronic record using the public key of the subscriber. These are the five. These are the five statement in front of you, guys. Please mark the correct statement based on this options. 1, 2, 4 and 5 are correct. यानी 1, 2, 4 and 5 statement जो है आपके सामने वो करेक्ट है, या 1, 2 and 3 are correct, या 1, 3, 4 and 5 only are correct, या all of them are correct. चलिए, the right answer of this question is 1, 2, 4 and 5 is correct. यानी ऑप्शन नंबर 3 जो स्टेटमेंट 3 है आपका, ये इनकरेक्ट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 3 ऑफ आईटी एक्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्विजिशन? A. Acquiring or agreeing to acquire only voting right of an enterprise. B. Acquiring only control over the asset of an enterprise excluding management control. C. Acquiring or agreeing to acquire share voting rights, assets or control over the management or asset of an enterprise either directly or indirectly. ठीक है, चलिए ऑप्शन डी, एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर शेयर एंड वोटिंग राइट ऑफ एन इंटरप्राइज. ये आपके सामने 4 ऑप्शंस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के. प्लीज मार्क द करेक्ट आंसर गाइस. यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the penalty for a person who fails to comply without a reasonable cause with a direction given by the commission of the director or the director general? Options are a penalty of up to 5 rupees, rupees 5 lakh. ठीक है. Option B, a penalty for rupees 1 lakh for each day of non-compliance subject to a maximum rupees of 1 crore. C, a warning with no financial penalty. या D, penalty for rupees 10 lakh for the first day increasing thereafter. ठीक है, चलिए बहुत सोच समझ के बताइए गाइस, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, in a merger scenario, what is the minimum asset value in India for a group to which the acquired enterprise belong to be considered a combination? आपको बताना है मर्जर के सिनेरियो में इनमें से क्या ऑप्शन आपके सही होंगे. ऑप्शन ए 1000 करोड़, बी 4000 करोड़, 6000 करोड़ या 3000 करोड़. ठीक है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4000 crore. That is option B. Next question, what is the legal consequence of entering into a combination that causes or is likely to cause an applicable adverse effect on competition within the relevant market in India? Options are, the combination is declared void, the combination is subject to financial penalty, C, the combination must undergo a government review, D, the combination is automatically proved after a certain period. ठीक है, the right answer of this question is the combination is declared automatically void. चलिए next question, the Competition Commission of India was established on 14th of October 2003 by the central government, 24th of October 2003 by the central government, 14th October 2003 by the central government, या 14 September 2003 by the central government. Again, index based question, but yet important one. The right answer is 14th of October 2003 by the central government. Next question, what is the timeline for the commission to form its prima facie opinion after the receiving a notice under section 2 subsection 2 of the Competition Act? ठीक है, सेक्शन 2 सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना है. ऑप्शंस आर 30 डेज, 15 डेज, 45 डेज या 60 डेज. चलिए, द राइट आंसर इज 30 डेज. ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी सर्व्स द एपेलेट ट्राइब्यूनल अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017? Options are National Company Law Tribunal, Central Government, National Company Law Appellate Tribunal या Competition Commission of India. ठीक है, ये है आपके सामने ऑप्शंस. The right answer is National Company Law Appellate Tribunal. Okay. Next question, guys. How often is the commission required to prepare an annual report on its activities and submit it to the central government? Okay, options are twice a year, once every year, once every 2 years या once every 5 years. The correct answer is once every year. हर साल एक बार इनको एक एनुअल रिपोर्ट जो है ऑफ ऑन इट्स एक्टिविटी सबमिट करनी पड़ती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर अ पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई with the order or direction issued by the commission or does not pay the fine imposed? Okay, options are imprisonment for 1 year or fine up to 10 crore, imprisonment for 6 months or fine up to 5 crore, imprisonment of 5 year or fine up to 30 crores या imprisonment of 3 year or fine up to 25 crore या both. ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है. प्लीज मार्क द करेक्ट आंसर. The right answer is absolutely right, guys. That is D. ठीक है, चलिए. Last question for the day is, what action does the commission take when it believes a combination may cause or has caused an appreciable adverse effect on competition? Options are, the commission immediately imposes penalty on the party involved. Okay, the commission conduct an investigation without notifying the parties. C, the commission dismisses the case without any further action. ठीक है. Option D, the commission issues a notice to show cause allowing party to respond within 15 days. ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए गाइस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को एंड गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए, the right answer is absolutely right. The commission issues notice to show cause allowing a party to respond within 15 days. ठीक है, चलिए, ये था गाइस आज की पूरी एक्सरसाइज जिसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस सीबीआई एपीपीओ के लिए एपीपी के लिए हमने यहाँ पे देखे हैं. ये 50 क्वेश्चंस जो है काफी इंपॉर्टेंट थे आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, और इसी तरीके से सारे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा डेली बेसिस पे, जिससे कि हम प्रिपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए. हम जानते हैं ये एग्जामिनेशन करीब है, 11 जनवरी को आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है. ठीक है, तो जुड़े रहिए गाइस इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के साथ, अपनी तैयारी करते रहिए और जल्दी ही ये सीट आपकी पक्की होगी. थैंक यू सो मच.